Okay, Bismillahirrahmanirrahim. But before starting, असाइनमेंट 4 जो है वो अपलोड हो चुकी है आपकी, और आप उसे देख सकते हैं। टीम्स पे मैंने अपलोड की हुई। यस सर, मिल गई थी सर। Okay, so yesterday we started chapter number 7, which is about filter design techniques. Sharoz, have you gone through the lecture, and if you have any questions? नो सर। Okay, anybody else? Mehrtaba, बेटा आपका कोई क्वेश्चन? सर वो एच ऑफ जे ओमेगा से ई ऑफ जे ओमेगा से ई रेज़ टू पावर जे ओमेगा सर्कल में जो मैपिंग करते हैं वो एक दफा रिपीट कर दें, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन किसी और का? जो भी बंदे क्लास में बैठे हुए हैं, किसी का भी कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज आस्क। So in fact we were talking about we need transformations because we want to use analog filter design material. So that's why the transformation is helping us in that regard. And the specifications are given to us in discrete domain. We translate these specifications from discrete domain to continuous domain using that particular transformation. And then from we design our filter in continuous domain, in analog domain, and then convert that analog domain filter or HFS into discrete time domain filter as h of z. So in that context, we said that these are the desirable properties of the transformation, any transformation, whichever comes into your way. And that is that causal and stable filter in analog domain should be converted into causal and stable discrete time filter. And the reason for that is that if you have designed an HFS, which is causal and stable, but if your transformation is not capable enough of transforming it into a discrete time filter which is causal and stable, then there is no use of having that transformation. And similarly, if we have a transfer function which is rational in HFS and your transformation cannot convert it into a rational h of z, in that case that is of no use, because if h of z is not rational, that cannot be transformed into linear constant coefficient difference equation, and it cannot be implemented. And the j omega axis in S plane to get transformed onto exponential j omega circle on Z plane, because whatever the specifications given to us in discrete domain, they are in fact associated with the discrete time Fourier transform. The specifications discrete time Fourier transform की specifications हैं, and they are only defined on this exponential j omega circle. So when this transformation will be into action, this exponential j omega circle should be transformed onto h of j omega, because j omega axis is in fact the CTFT. So this circle exponential j omega circle should be transformed onto j omega axis, or j omega axis should be transformed onto the exponential j omega axis, so that the specification should be transformed, and the filter which is obtained in h of j omega terms or the CTFT terms, that should be transformed into back into exponential j omega terms, which is the DTFT. So we started with the impulse invariance transformation, and the transformation is that you have impulse response in continuous domain, which is h of t, and you are sampling it, and you know the sampling procedure. There is no problem in that. So at t is equal to nt, you are sampling your h of t, and now we will be checking the this proposal in context to these desirable properties. And so these are the desirable properties we had already discussed. And the question is that does the causal and stable HFS transform into causal and stable HFZ? And we started with a very simple transfer function in HFS, which is rational, and we also know it is given that it's stable and causal. So that's my transfer function HFS, and I know that for stability and causality, all the poles must be on the left hand side of the j omega axis. And if that is the case, in that case your sigma, which is in fact s is equal to sigma plus j omega, or a real of s plus real of
plus j imaginary of s. So real of sk will be lesser than 0 or sigma is lesser than 0. So these are the things which are known. Then we are using h of t, which is in fact the inverse Laplace transformation of this h of s, which was given. And then u of t is indicating that it's causal because this was given as well. And that's just the inverse Laplace transformation. So now applying the transformation, and the transformation is h of t given at n t is equal to nt, that would be h of n, and you are just replacing t with nt in this equation, and u of t is replaced as u of n, and this is showing the causality in discrete domain. And now you know h of n. From h of n you can move to h of z. So h of z is given as, this is your h of z, this one. But now we have to give the answer that it is stable or not. We don't know yet, but we know that this is the location of the pole, e raised to power skt. If this is lesser than 1, it means the system is stable, because for a causal and stable discrete time filter, all the poles must be inside the unit circle. So we only know that real of sk is lesser than 0, and e raised to power sk magnitude, we are looking for this magnitude, which is nothing but e raised to power sigma t multiplied by e raised to power j omega t, but e raised to power j omega t is always 1, the magnitude of this is always 1. And if sigma is lesser than 0, which already known, in that case e raised to power sigma t is lesser than 1, which is stable. So for starting with a stable and causal analog filter, we have reached to h of z, which is stable and causal. And as a byproduct, in the meantime, in the process of doing this, we have also concluded that the rational transfer function in h of s is can be transformed using this impulse invariance transformation, that can be transformed into a rational transfer function in z. And now the third thing is that j omega x's, okay, j omega x's can be transformed onto the exponential j omega circle. So what we are doing, we have obtained h of n from h of t, and that's the sampling procedure. And this is an equation we have obtained, chapter number 4, sampling procedure. So I'm just using that equation, which is the final equation as a result of frequency domain analysis of the sampling process. So what it was showing that h of exponential j omega is equal to 1 over t summation k h of omega, capital Omega minus k omega s. And what's this h of omega? H of omega is the original copy, the CTFT of that. So that was my h of omega, and this equation is showing me that I will be having multiple copies of h of j omega when it will be converted into h of exponential j omega. So that's the situation. You have seen it in chapter number 4, that you are having multiple copies as a result of sampling in the time domain. Fine, everything is fine as far as this pi over this spectrum h of j omega or the continuous time Fourier transform is band limited to pi over t and minus pi over t, because that's the omega small omega axis, so which is multiplied with t. So as a result of that, everything will be confined to pi and minus pi, and you will be having multiple copies. But if something is leaking out of this pi over t, as a result of that, you will be aliasing in these multiple copies, and these will be deteriorating your desired frequency response. Okay. So as a result of that, so actually this is your transformation as in frequency domain. Capital Omega is equal to omega. When you will be changing your specifications, you will be using this transformation. So, and we had applied then this transformation, which is analogous to what you had already done in your drawing course as well, that this is my h of j omega. That's my omega axis, and this red line is indicating that my CTFT is band limited to within pi by t. That's my transformation, which is capital Omega is equal to omega, and I'm projecting my values of h of j omega onto h of exponential j omega. So as far as everything is within that limit of pi over t, so everything will be within the limits of pi,
which is the requirement because we will be having the multiple copies in that case. But if something is leaking out, as a result of that, these things will be going out of pi, but there is no such thing as greater than pi. There is no unique component of h of exponential j omega which is greater than pi because everything is limited to pi. The maximum frequency in discrete time filter discrete time systems is pi. Everything is repeated after that. So as a result of that, that would be wrapped around in this zone, and we will be having aliasing. Ji Meritaba, any questions, beta? Hope I have answered your question. Yes, sir. Sharoz, beta, any question? No, sir. Khokhar Saab. Nimra Idris. Zishan. No, sir. Zan. Okay. So we also discussed it. There's another way of transformation. When whatever on the j omega axis was, it is from minus infinity to infinity. So whatever it was on between pi over t and minus pi over t, that is transformed into this circle. From pi over t to 3 pi over t, that would be transformed into this circle. So as a result of that, it's many to one mapping, and this is creating aliasing in your frequency response of discrete time filter. Okay जी, let's इसको मिटा दें और फिर उसके बाद इसको दोबारा से ओके कोई ऐसी चीज नहीं ओके जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. Now this is what we are starting now. Now this is an example related to IR filter design. Butterworth filter. We have talked about Butterworth filter. Butterworth filter क्या होते हैं? Sharoz. जी Sharoz. बेटा यस नो कर दिया करें, अगर कोई मसला नहीं, अगर नहीं आता तो क्या फर्क पड़ जाएगा, लेकिन जवाब दिया करें. सर वो मोनोटोनिक करते हैं जी, monotonic both in pass band and stop band. These are Butterworth filter. Okay, and we will be using the transformation which we had already talked about, which is impulse invariance. And the example is about impulse invariance transformation, designing your IR filter. Specifications देखिए क्या है. Specifications are discrete time specifications given है. कैसे पता चल रहा है ये discrete time filter specifications हैं मेरे ताबा? सर ये j ओमेगा के उसमें है, e raised to power j ओमेगा में. बिल्कुल, एक तो यहाँ से पता चल रहा है, ये ओमेगा स्मॉल ओमेगा की बात तो हो रही है. इट्स अ डिस्क्रीट टाइम, एंड देयर इज वन मोर थिंग व्हिच इज एसोसिएटेड विद दैट, एंड दैट इज द मैक्सिमम थिंग जो आपको नजर आ रही है वो पाई है. ठीक है, ओमेगा इज बिटवीन 0.3 पाई एंड पाई. अगर ये एनालॉग फिल्टर डिजाइन होता तो इसका मतलब है कि फिर कोई लिमिट यहाँ नहीं होनी चाहिए थी, बिकॉज इन्फिनिटी तक आपकी स्पेसिफिकेशंस जानी चाहिए थी. यहाँ पे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट जो है वो आपको पाई नजर आ रहा है. ओके, लेट्स elaborate these specifications. अच्छा जी, तो 0.89 और 1 के दरमियान है. सो सपोज एंड सपोज कर लेते हैं दैट्स माय. ओके, सो दिस इज 1,
This is 0.89 and this thing इस जगह तक जहाँ तक पास बैंड है आपका that is 0.2 pi और स्टॉप बैंड आपका स्टार्ट हो रहा है यहाँ से that is 0.3 pi और ये जो है टेन्यूएशन है that is 0.17 ठीक है and so that's my pass band and ये मेरा transition width है. This is my stop band and that's my pass band. And the maximum frequency is pi. And of course the replica of that is there as well on the left hand side, but we are not showing it. So the discrete time filter specs are showing that h of exponential j omega, this is my h of exponential j omega, the desired discrete time filter response. H of exponential j omega is between 1 and 0.89, 1 and 0.89, and it is lesser than 0.17, between omega is between 0 to 0.2 pi. This is my pass band 0 to 0.2 pi. And h of exponential j omega is lesser than 0.17, lesser than or equal to 0.17. For omega is between 0.3 pi and pi, omega is between 0.3 pi and pi. So this is the required response, and we have to design a discrete time filter. As we said that we will be taking these specifications and we will be transforming these specifications using discrete time, using the transformation impulse invariance and converting the specs into continuous time specs. Okay, so whatever the transformation is, omega is equal to omega. So in fact, omega, capital Omega was equal to omega over t, with the radians per second, but we are assuming that t is equal to 1. So as a result of that, omega is equal to small omega. That's my impulse invariance transformation, the straight line. Okay, so let's do it. So that's the specifications. H of j omega. Now it is not h of exponential j omega, h of j omega, the CTFT specifications. These are between 1 and 0.89, when capital omega is between 0 and 0.2 pi, and h of j omega is lesser than 0.17 when omega is greater than 0.3 pi. Now it is obvious from here that it is different from the previous specification, because that was between 0.3 pi and pi. Here I'm saying that omega is greater than 0.3 pi. So it's a continuous time frequency, which is moving from 0.3 pi to infinity. I mean, that's the situation. Infinity तक आपका यही चीज जो है चल रही है, मतलब इससे नीचे होना चाहिए, lesser than equal to था, ठीक? So इस तरह की situation है, and that's again the same specification. Should I make it okay so that so again this 1 0.89 0.17. This is my pass band, so this is 0.2 pi radians per second this time, and this is 0.3 pi radians per second because it's the omega axis, and this is my h of j omega. Any questions? So this was the first step, and the details are given here. I mean, you can see it from here. These are the specifications transformed, and that's the pictorial representation of h of capital J omega. Ji beta, any questions? Any confusions? No, sir. No, sir. Okay. So the next step is
to get our filter. Before moving there, so that's the Butterworth filter transfer function. Design of continuous time filter specifications. As I was saying that there is a lot of material available in analog filter catalogs. So that's the magnitude square function of our Butterworth filter. यहाँ पे आपको दो चीजें नजर आ रही हैं इस magnitude square function में. One is omega c and the second one is n. Now n is the order of the filter. And omega c is the cutoff frequency. These are the tuning parameters, controlling parameters for this Butterworth filter. So let's talk about these and then come back. Okay. That's the situation. So this is my Butterworth filter design and how this transfer function is represented here. देखिए यहाँ पे आपको ये कोई response है filter का and omega c is the cutoff frequency which is also called the 3 dB cutoff frequency. 3 dB log में इसका मतलब है half power point होता है आपका 1/2 under root square. That's the value of this point जहाँ पे ये omega c जो है वो आपका project होता है magnitude axis पे h of j omega axis. Okay, so as you increase n, this roll off जो है ये आपका roll off जो है ये increase करता जाता है, यानी जैसे जैसे order of the filter बढ़ता चला जाएगा आपका filter response जो है वो ज्यादा sharp होता चला जाएगा. यानी अगर मेरा n 20 है तो उस केस में मेरा जो filter response है वो ये हो सकता है. अगर मेरा n 30 है तो मेरा filter response जो है that can be. So जैसे जैसे आपका n बढ़ता चला जाएगा आपका filter response sharp होता चला जाएगा and the time will come, time can come, time may come जब आप approach कर रहे होंगे अपने ideal frequency response को. Of course which is not possible but desired is that कि हम ideal की तरफ जाएं. So there must be some compromise on n and the desired frequency response, because as you are increasing n you are approaching to the ideal frequency response, but increasing n means you are increasing the order of the filter, increasing the number of poles, and as a result of that both either it is active filter or the passive filter, you are increasing the cost of the filter. So रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए? रिक्वायरमेंट ये होनी चाहिए कि हमारा n कम से कम रहे, but at the same time we have to meet the specification given to us. So meeting the specifications or the specifications given to us, we want that our n should be as minimum as possible, as low as possible. So that's the requirement. Any confusions about this thing, about this concept? No, sir. Okay. So अब आते हैं अपने इस फिल्टर की तरफ. देखिए मैं इसको कह देता हूँ this is points के साथ क्या किया. Suppose कर लेते हैं this is my point, these are my points A, this is my point B, this is my point C, and this is my point D. Okay, now we know that the slope of this line in the transition band, the slope of this line जो के connect हो रही होगी, that is associated with n. So we need n small. We need to keep this n small. So किन दो points में से गुजरना चाहिए मेरी इस because मैं चाहे इस line में से गुजारूं या इस line में से गुजारूं या इस लाइन में से पॉइंट पे पहुंचूं या इस पॉइंट पे पहुंचूं, मेरी स्पेसिफिकेशंस तो मीट हो रही हैं. ठीक है,
स्पेसिफिकेशंस को मीट करते हुए मैं किन दो पॉइंट्स को कनेक्ट करूं कि मेरा n जो है वो स्मॉल रहेगा, दैट इज द स्लोप ऑफ माय लाइन विल बी लेसर एंड n विल बी स्मॉल। जी कौन से दो पॉइंट्स होंगे? B and C. B and C are the points because I can इन दो पॉइंट्स को भी मैं मिला सकता हूं, A and C को भी मिला सकता हूं, मैं A and D को भी मिला सकता हूं। ऑफ कोर्स यहां से नजर आ रहा है अगर मैं A और C को मिलाता हूं और A और D को मिलाता हूं तो मेरी स्लोप जो है वो A और D के केस में ज्यादा है। सो इन दो में से मैं आई वुड बी चूजिंग A and C। चले मैं जरा ट्राई कर लेता हूं कि एक और ऑप्शन मेरे पास मौजूद है, वो है B और C की, एंड इट इज ऑब्वियस कि B और C वाली जो स्लोप है वो लेसर है एज कंपेयर टू A and C। एंड फाइनली इफ आई सी B और D की जो स्लोप है वो इससे ज्यादा है। सो एज वन ऑफ आवर फ्रेंड सेड, आई डोंट नो द नेम ऑफ द पर्सन बट ही सेड कि B और C को मिलाना चाहिए एंड इट्स करेक्ट। सो आवर रिस्पॉन्स यानी बटरवर्थ फिल्टर रिस्पॉन्स जो है दैट शुड बी पासिंग, क्योंकि बटरवर्थ फिल्टर मोनोटोनिक होता है। सॉरी यार, ये इसको क्योंकि बटरवर्थ फिल्टर मोनोटोनिक है, सो माय बिहेवियर इज ये पॉइंट बी पे आएगा, बी वाली लाइन फिर नीचे आ रही है, सी में से गुजर रही है और फिर ये मोनोटोनिक बिहेवियर है, ये इस तरह से चल रहा है, जो भी है नॉन जीरो है जो होता जा रहा है। सो दैट्स माय रिक्वायरमेंट। स्पेसिफिकेशंस भी मीट हो रही हैं एंड पासिंग दीज थ्रू बी एंड सी आई विल बी having the minimum slope of all these four slopes possible, जो चार slopes मुझे मिल सकती थी, and as a result of that my n जो है वो that would be lesser. So इसको यूज करते हुए I will be having these two equations. h of j omega at omega is equal to 0.2 pi, omega j omega at 0.2 pi as I'm passing through this point B, so it is 0.89, and h of j omega at 0.3 pi as I am at point C, so that is 0.17. So that's the situation. ये दो equations मेरे पास आ गए। ठीक है जी? Yes, sir. Okay, and now I know the magnitude square function for Butterworth filter, which is given to me. H of j omega square is equal to 1 plus 1 over 1 plus j omega or j omega c raised to power 2n. So now that's the situation. H of j omega square at omega is equal to 0.2 pi. I know that it is 0.89. So it is 0.89 square, and that is equal to 1 over 1 plus omega is 0.2 pi divided by omega c raised to power 2n. And similarly, h of j omega square at omega is equal to 3 pi is 0.177 square is equal to 1 over 1 plus 0.3 pi over omega c raised to power 2n, and that's my equation 4. So I have now two equations and two unknown. And what are the unknowns? N and omega c. You can solve it. Hope everyone can solve it. कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। So क्या होता है जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो you get omega c is equal to 0.704 and n is equal to 5.88. And as you know that this is the order of the filter that cannot be in fractions, so you move it to n is equal to 6. शेरोज इस पे हाँ ना करते जाएं बेटा, अगर कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज स्पीक अप। सुमन बुकमन बनी ना बने बैठे रहे ना, किसी को भी कोई n और ओमेगा सी कहां से है? ये कौन साहब है, नाम बताते जाए ना। हुसैन सर। जी हुसैन बेटा इन दो इक्वेशंस को सॉल्व किया ना,
2 इक्वेशंस 2 अननोन्स n एंड ओमेगा c जो आपके पास अननोन्स मौजूद थे। हुसैन बेटा हाँ ना बोलते हैं ना फिर। सर आवाज सही नहीं आ रही, आवाज बहुत कट रही है। चल, so this is my omega c 0.704 and n is equal to 5.88, and as n is the order of the filter, so I will be making it whole number, n is equal to 6 कर दूंगा। और अब n is equal to 6 करने से there will be the effect on omega c, so अब मुझे क्या करना है, देखिए ये सिचुएशन थी, n was associated with this slope। जब आपने पॉइंट बी और पॉइंट सी में से गुजारा था तो क्या हुआ था, पॉइंट सी बी और सी में से, दिस इज वेरी क्रिटिकल पॉइंट, प्लीज पे अटेंशन। जब आपने पॉइंट बी और सी में से गुजारा था तो आपकी स्लोप इस वक्त आई है, जो स्लोप आई है वहां से जो आपने n फाइंड आउट किया है दैट इज 5.88, बट नाउ आई एम इंक्रीजिंग द स्लोप। जब इस स्लोप इंक्रीज हुई होगी तो ऑफ कोर्स n जो है वो 6 हुआ है, n इज इक्वल टू 6 हुआ है, तो मींस कंसीक्वेंटली पीछे स्लोप भी इंक्रीज हो रही है। और अब इस n को दोबारा इन इक्वेशंस में डालना है, इधर इन दिस इक्वेशन और इन दिस इक्वेशन टू गेट ओमेगा c बैक। सो नाउ द क्वेश्चन इज किस इक्वेशन में डाला जाए, इस इक्वेशन में डाला जाए या इस इक्वेशन में डाला जाए, बिकॉज दोनों से आपको मिलेगा, बट देयर इज वन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू दैट कि आपको किस इक्वेशन में डालना है n इज इक्वल टू 6 टू फाइन ट्यून योर ओमेगा c। जी बेटा मेरे ताबा, एनी आइडिया? ऊपर वाली में सर। ऊपर वाली कौन सी है? दिस वन 0.89 वाली। किस वजह से, व्हाट्स द लॉजिक बिहाइंड इट? क्योंकि वो पॉइंट सर इसमें हमारे पास ये क्या है कि हम लोगों ने स्लोप इंक्रीज कर रहे हैं उसका n की वैल्यू से, तो इस वजह से। उससे क्या होगा फिर? ठीक है, यू आर अप्रोचिंग, यू आर इन द राइट डायरेक्शन, बट व्हाट विल बी द एडवांटेज ऑफ दैट? देखिए अगर मैं ऊपर वाली इक्वेशन जैसे भाई कह रहे थे 0.89 वाली, अगर मैं वो इक्वेशन यूज करता हूं तो आई विल बी पासिंग थ्रू दिस बी पॉइंट, और अगर मैं ये इक्वेशन यूज करता हूं 0.17 वाली तो आई विल बी स्ट्रिक्टली पासिंग थ्रू दिस पॉइंट सी। सो मुझे किस पॉइंट में से स्ट्रिक्टली गुजरना चाहिए, तो मैं आई विल बी ओवर डूइंग इन अदर साइड। सो अगर मैं इस बी में से गुजरता हूं तो इनफैक्ट क्या सिचुएशन होगी, मैं बी में से गुजरूंगा, लेकिन क्योंकि मेरा 5.88 से बढ़ा हुआ है ऑर्डर, तो कंसिक्वेंटली मेरी स्लोप भी बढ़ी हुई होगी, तो आई विल बी पासिंग हियर, पासिंग थ्रू दिस बिटवीन सी एंड डी, सो आई विल बी ओवरडूइंग इन दिस एरिया जोन। और अगर मैं सी में से गुजरता हूं तो इन दैट केस आई विल बी पासिंग बिटवीन ए एंड बी। सो मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मैं दोनों केसेस में मेरी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, बट as you know that there are certain issues with impulse and variance transformation that stop band के अंदर जो आपका aliasing का इफेक्ट पॉसिबल हो सकता है, उसकी वजह से आई वुड बी प्रेफरिंग कि मैं इधर जो है जितनी जल्दी डाई डाउन कर जाऊं स्टॉप बैंड में, सो दैट कि जब मैं वापस HFZ में जाऊं तो मेरी परफॉर्मेंस जो है वो ज्यादा jeopardized ना हो। सो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट आई विल बी यूजिंग दिस इक्वेशन 0.89 वाली, so that I will be passing strictly through this B, and then I will be overdoing in the stop band in order to avoid aliasing as much as possible in my stop band. Hope I have answered the question. Yes sir. Okay, so that's the situation. N is equal to 6 equation 3 में डाला, and omega c जो है अब change हो गया, omega c is equal to 0.7032, and that's my HFJ omega square which was already given associated with Butterworth filter design, and that is 1 over 1 plus omega over 0.7032, 2 of n जो है 2n जो है वो change हो गया 12 में। Now these are magnitude square function जो है, this is associated with HFS, so हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, this is HFS multiplied with HF minus S, and that is equal to 1 over 1 plus S over 0.7032 raised to power 12. So HFS square की
अगर हम बात कर रहे हैं, so that would be in this form. अच्छा, अब आते हैं how to get the transfer function and how the poles of HFS square जो हैं वो कैसे प्लेस हुए हैं. अच्छा, मेरा ख्याल है कि मुझे दोबारा बनाना चाहिए इधर. ओके, this is my j omega, this is sigma, and I am talking about S plane. It is not Z plane, it is S plane, and my n is equal to 6 and my omega c is equal to 0.7032, which I have obtained here, 7032, and that's my transfer function for h of s, or in terms of h of j omega it is in this form. And you can imagine that here omega is appearing here, s is appearing, and s is equal to j omega plus sigma, and sigma is equal to 0 j omega axis है. So that's why this is the relationship between these two equations. So j omega axis पे आपका क्योंकि discrete time Fourier transform defined है, so that's the situation. अच्छा, अब all the poles of this S plane के अंदर कितने poles हैं? 12 poles हैं. 6 जो हैं वो HFS के हैं, which is your system, और 6 जो हैं वो HF minus S के हैं. And we are saying that system जो है आपके पास यहाँ पे जो आपके poles plot होने जा रहे हैं वो HFS के भी और HF minus S के भी poles plot होने जा रहे हैं, and that are present at a radius of omega c. So this is very important. थोड़ा सा इसको तवज्जो के साथ देखिए कि आपके पास जो poles पड़े हुए हैं, and remember this is not Z domain and this is not unit circle. And this is not a unit circle. ठीक है? This is very important because people confuse this with Z plane. This is S plane, और S plane में आपके पास 12 poles हैं और उन 12 poles को हम plot करने जा रहे हैं, and we are saying that all the poles are at the radius of omega c पे पड़े हुए हैं, and you know what is omega c, that is 0.7032. अच्छा, आपके पास कितने poles हैं? 12 poles हैं. 12 poles 360 डिग्री पे आप उसे स्प्लिट कर रहे हैं. सो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट आपके पास ये पोल्स पड़े हुए हैं. ये वाले जो आपको पोल्स नजर आ रहे हैं ऑन द राइट हैंड साइड, ये HF माइनस S के पोल्स हैं, और जो आपको लेफ्ट हैंड साइड पे नजर आ रहे हैं, बिकॉज वी वांट अ स्टेबल एंड कॉजल सिस्टम, दीज आर स्टेबल HFS के पोल्स हैं. Any confusions or questions related to these placement of poles? No sir. These are continuous time system जो है उसके poles की हम बात कर रहे हैं. Discrete domain के poles नहीं हैं. As I'm saying, it's not a Z plane. It's not a discrete representation. HFS के poles और HF minus S के poles की बात हो रही है. 6 poles आपके HFS में हैं, 6 poles आपके HF minus S में हैं, because that was the magnitude squared function, so that's why it was containing 12 poles. As a result of that आपके 12 poles जो हैं वो 360 degrees पे at the radius of omega c ये इस तरह से split हैं. Now आपको HFS find out करना है. HFS find out करने के लिए सर जी बोलें. सर हम लोगों ने ये जो 0 से इस तरफ वालों को माइनस HF माइनस S के पोल्स क्यों कह रहे हैं? हम उनको नेगेटिव की वजह से दूसरे साइड को माइनस HF माइनस S क्यों नहीं कह रहे? Stable and causal. Yes sir. For a stable and causal analog filter, all the poles must be on the left hand side. Yes sir. ठीक है. अच्छा, अब आपके पास एंगल भी मौजूद है हर पोल का और उसका रेडियस भी मौजूद है. सो द कोऑर्डिनेट्स कैन बी कैलकुलेटेड. और एक और इंपॉर्टेंट चीज कि ये आपके पास कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पेयर्स हैं. इसका पेयर क्या है? ये पड़ा हुआ है. इसी तरह से इस पोल का पेयर क्या है?
ये पड़ा हुआ है, और इस पोल का पेयर क्या है, ये पड़ा। So all the poles are in complex conjugate pairs, so that we will be having real numbers in our coefficients. You know the angle of every pole, it is known, and you know the radius omega c. So the coefficients or the coordinates can be calculated. So if I call this as 1, तो इसका pair जो है वो 2 है, S1 कह देते हैं, S1 and S2. So that's my S3 S4 का pair है, and S5 and S6 का pair. I am interested in these poles, of course, because they HFS के poles हैं. So अगर मैं इसको calculate करूं तो मेरे S1 S2 जो हैं, that is equal to minus 0.182 plus minus J 0.679. So this one is minus 0.82 plus J 0.679, and this one is minus 0.182 minus J 0.679. Similarly, S34 जो है, that is equal to minus 0.497 plus minus J, just the representation in Cartesian coordinates, J 0.497, and similarly S56 जो है, that is equal to minus 0.679 plus minus J 0.182. So these are my poles, location of the poles, and I can get my HFS using the formula, because that formula is coming along with this formula as well, as I was saying, that everything is present in analog filter design. So HFS जो है, that is in fact omega c raised to power n divided by S minus S1, S minus S2, S minus S3, and up to S minus Sn. So in this case we have 6 poles. तो 6 poles के साथ जब आप इसको solve करेंगे, तो you will be ending up with HFS as and that's equal to 0.12093, that is coming from here. 0.7032 raised to power 6 is this thing, and then you will be having the quadratic second order, because combining S1 and S2, S3 and S4 and S5 and S6, you will be having second order terms, 0.3640 S plus 0.4945, something like that, and then you will be having terms, 3 terms, because they will be coming from these using this S सर ये minus. जो आपने पोल्स के जो ये मैग्नीट्यूड निकाले हैं, ये जो 0.182 minus 0.497, ये कौन सी इक्वेशन से निकाले हैं? किसी भी इक्वेशन से नहीं निकाले, इसके लिए कोई डीएसपी की इक्वेशन की जरूरत है? जरा गौर से देखें, इसका एंगल अगर मुझे पता हो, इसका एंगल क्या है, S1 का एंगल क्या है, 115 डिग्री। इसका डिस्टेंस क्या है, ओमेगा सी क्या है, वो तो गिवन ही है, दैट इज 0.7032। अगर मुझे किसी भी इसका मुझे अगर डिस्टेंस भी पता है और एंगल भी पता है, तो क्या मुझे लोकेशन पता नहीं चल सकती? इट इज नथिंग टू डू विद डीएसपी. You must have done in Yes, polar sir. coordinates and Cartesian coordinates circuit 2 में भी किया होगा. Yes sir. ठीक है ना, यही चीज है ना, कार्टेशियन पोलर कोऑर्डिनेट्स में ये यही चीज होगी ना. और दिस थिंग विल बी व्हाट, यानी ये मेरा S1 है. सर और ये एंगल आपने मैग्नीट्यूड का तो हमें चलो पता चल गया था, एंगल आपने ये 115 कहां से लिया है? तुम खुद सोचो यार, कहां कुछ तो थोड़ा सा सोच लो, आंखें तो खोलो. 6 पोल्स थे, मैंने कहा 6 को, क्योंकि HFS स्क्वायर की बात हो रही है,
तो कितने पोल हो गए? 12 हो गए इससे एसोसिएटेड, 360 डिग्री पे स्प्लिट किए हुए हैं। तो दरमियान में डिस्टेंस क्या है? 30 का डिस्टेंस है। एंड आई वांट टू अवॉइड द पोल्स ऑन दीज एक्सिस। यहाँ पे जे ओमेगा एक्सिस पे पोल्स मैं नहीं रखना चाह रहा हूँ, बिकॉज दैट वुड बिकम एज ऑसिलेटर। और उनको अवॉइड करने के लिए, क्योंकि अगर मैं यहाँ से पोल स्टार्ट करता तो आई विल एंड अप विद दिस थिंग, 30 पे, 60 पे, फिर 90 पे पोल आ जाता। सो कीपिंग द डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स 30 का डिस्टेंस रखते हुए, आई हैव स्टार्टेड एट 15 डिग्री पे, 15, 45, 75, 115, 145, ठीक है, इस तरह से। यस सही सर, थैंक यू सर। हाँ जी, कनेक्ट हो गए दोबारा शहरोज? यस सर। ओके, वो मेरा ख्याल है कि मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम था, डिस्कनेक्ट हो गया था। यस सर। ओके, लेट्स गो बैक। ओके, रिकॉर्डिंग तो स्टार्ट नहीं की। हाँ जी, अच्छा रिकॉर्डिंग चल रही है, चले, अच्छी बात है। जी शहरोज, क्लियर हुई बात वो? यस सर, हो गई थी सर, थैंक यू सर। सो ये चीजें आपके पास मौजूद हैं, ये एंगल्स मौजूद हैं। आई वांट टू अवॉइड कि मैं यहाँ पे मेरे पोल ना पड़े हुए हों, सो दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड फ्रॉम 15 डिग्री। यस सर। ठीक है, तो अब आपके पास 0.7032 इज द रेडियस ऑफ दिस पोल एंड 115 डिग्री पोलर कोऑर्डिनेट्स मौजूद हैं। You can convert it into Cartesian coordinates, or if you are comfortable working in polar coordinates, you can do there as well. But in this case, probably you will be needing Cartesian coordinates as well. ठीक है? So that's my HFS. अब HFS से कहाँ जाना है? Because my requirement was to design a discrete time filter. This is my continuous time filter. शहरोज बेटा, इंटरनेट के मसाइल हैं, प्लीज अगर किसी भी वक्त मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर। ओके ओके, सो क्योंकि मुझे पता चलना चाहिए कि ये ना मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। So these are my poles which are associated to HFS, H of minus S. These are the poles which are associated with HFS, and I have obtained my HFS. And now from
HFS, I have to move to HFZ, and in the start of this lecture we did that HFS is equal to AK over S minus SK. So if this was the situation, I have converted into HFZ as AK over 1 minus e raised to power SKT Z inverse. So using this transformation, I can be making my HFZ. So that's my HFZ which I have obtained. So this is an example from your book. So you can consult your book as well. Any questions? सर ये HFZ बनाने वाला स्टेप दोबारा बता दें, वो मैं इधर फोकस नहीं था तो इस वजह से। HFZ वाला ये स्टेप है. So every pole, this was the pole S minus SK. So you have two poles in this portion. Just take this one, the general equation, S minus S1. If you have this thing, so you can directly convert from S domain to Z domain by 1 minus SK. This is SK now. S1 is SK. So 1 minus e raised to power S1 t is equal to 1. So e raised to power S1 Z inverse. इसी तरह से S2 के लिए आप यूज करेंगे और फिर आप उनको कंबाइन करेंगे तो यू आर एंडिंग अप विद दिस थिंग. सेकंड ऑर्डर इक्वेशंस जो है वो आपको मिल रही हैं. यस सर. ठीक है. So these are the things which we have already gone through. Again, this is the relationship of n with your filter response as you're increasing your filter order. As a result of that, your response is approaching the ideal response, and which should be the requirement, but as you're approaching towards ideal response, your n is increasing, which is increasing the cost of the system. So you have to maintain an order. It's n और ओमेगा n और फिल्टर रिस्पॉन्स के दरमियान आपको देखना पड़ेगा कि किस तरह से आपने चलना है. यू हैव टू कीप द स्पेसिफिकेशंस. So this is the solution of the filter which we have already done. Okay, ये आपके पास HFS स्क्वायर के पोल्स की डिस्कशन हो रही है. बटरवर्थ फिल्टर के पोल कैसे पड़े हुए हैं. So suppose there was some non-zero omega c, so the radius for these is omega c. Here it is written as omega naught. इसको भूल जाइए because ये डिस्क्रीट टाइम जिस बुक से लिए गए हैं वो आपकी बुक नहीं है. सो वो नोटेशन जो है वो गलत यूज हो रही है. स्मॉल ओमेगा यूज हो रही है. शहरोज आवाज आ रही है? यस सर. सो सपोज अगर मेरे पास n इज इक्वल टू 4 है तो इन दैट केस 2n जो है वो हो जाएगा 8. सो HFS स्क्वायर के में आपके पास कितने पोल्स हो जाएंगे? 8 पोल्स हो जाएंगे. n स्क्वायर के n के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है. सो जो 8 पोल्स जो हैं उनकी लोकेशन क्या होनी चाहिए? 360. जो स्पेसिंग है उनके दरमियान वो ये स्पेसिंग है 360/8. ठीक है. सो मैंने जब भी इस तरह की सिचुएशन है मैंने पोल्स इस तरह से प्लेस कर दिए. अब देखिए कोई भी पोल आपका जे ओमेगा एक्सिस पे नहीं पड़ा हुआ. जे ओमेगा एक्सिस जो है उस पे ऑसिलेटरी बिहेवियर आ जाएगा. स्टेबिलिटी जो है मार्जिनली स्टेबल हो जाएगा HFS. सो आई डोंट वांट दैट. तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि मेरे HFS के पोल लेफ्ट हैंड साइड पे हों और HF-S के पोल जो है वो राइट हैंड साइड पे हों. तो ये 8 पोल्स जो हैं ये मैंने प्लेस कर दिए. ठीक है. तो ये मेरे HFS के 4 पोल्स हैं और ये HF-S के 4 पोल्स इस तरफ पड़े हुए. सिमिलरली अगर n इज इक्वल टू 3 है, सो n इज इक्वल टू 3 के केस में मेरे पास HFS स्क्वायर के कितने पोल्स हो जाएंगे? 6 पोल्स हो जाएंगे. 360 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 60. इस केस में मैं यहां से स्टार्ट कर सकता हूं. यहां से स्टार्ट किया, 3 इधर है 3 इधर है. सो ये 3 पोल्स जो हैं ये मेरे HFS के हैं. जी एनी क्वेश्चंस? सर जो हमने पीछे HFZ फाइंड किया था जो उसका न्यूमरेटर था उसमें सर हमारे पास Z इनवर्स की टर्म कैसे आ गई थी? क्योंकि हमारे पास न्यूमरेटर में तो सिर्फ एक के था ना. बच्चा थोड़ा सा तो कुछ कोशिश कर लो. ये मेरे पास HFS था
और फिर सेकंड ऑर्डर टर्म्स को यूं समझ लीजिए कि मैंने ओमेगा सी ओवर z माइनस z यानी s माइनस एस के जो है ना, इसको क्या था, ओमेगा सी रेज टू पावर n, ये लिखा हुआ है s माइनस s1 s माइनस s2, सो एक सेकंड ऑर्डर टर्म ली है, सो दिस इज इक्वल टू ओमेगा सी रेज टू पावर 2 ओवर s माइनस s1 s माइनस s2। ये वाली टर्म उठाई है s डोमेन से, इसको मैं लेके गया हूं, तो अल्टीमेटली आई विल एंड अप विद दिस पोर्शन। इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, अगर आपको प्रॉब्लम हुआ तो फिर इसको देख लेंगे, ठीक है, जरा सॉल्व खुद से कर लीजिए, ठीक है। ये उसमें आपके पास ये सेकंड ऑर्डर टर्म्स जो हैं ये आपको मिलेंगी, ठीक है। Yes, sir. अच्छा, now due to aliasing in the resultant discrete time filter, we never know that the final filter will fulfill the requirements, because अभी हमने देखे n is equal to 5.88 से n is equal to 6 किया था, 6 करने के बाद उसको इक्वेशन नंबर 3 में से पास किया था n is equal to 6 को, सो दैट कि हम पास स्टॉप बैंड में बेहतर परफॉर्म कर सकें, बट स्टिल क्योंकि एलियासिंग इशू जो है आईआर फिल्टर के साथ इनहेरेंट है, सो स्टिल वी डोंट नो कि क्या हो रहा है। सो लेट्स सी द परफॉर्मेंस। सो रिक्वायरमेंट थी हमारी ये हमारी फिल्टर रिक्वायरमेंट थी, उसको अगर हम देखें, यानी ये हमारा बटरवर्थ फिल्टर डिजाइन लो पास फिल्टर का हमने बनाया है। सो अगर आप गौर से देखें 0.2 पाई पे इट्स डूइंग गुड। सो ये मेरा 0.2 पाई पे अगर रिस्पॉन्स में चेक करूं तो इट इज बिटवीन 1 एंड 0.89 विच इज क्लोज टू 0 dB, दैट्स फाइन। और 0.3 पाई पे अगर मैं देखूं तो इट इज अराउंड 0.17 dB। यहाँ पे मुझे ज़्यादा क्लियर नहीं हो रहा, लेकिन अगर मैं लीनियर स्केल पे आता हूँ तो आई कैन फाइंड आउट कि 0.2 पाई पे इट्स अराउंड 0.89, प्रोबेबली इट्स गुड। लेकिन 0.3 पाई पे अगर मैं देखूँ तो थोड़ी सी परफॉर्मेंस जो है इसकी 0.17 से ऊपर है, विच इज़ नॉट गुड, ठीक। इम्पल्स इनवेरिएंस ट्रांसफॉर्मेशन के साथ क्योंकि स्टॉप बैंड में इनहेरेंट इश्यूज मौजूद हैं, so as a result of that it's doing okay, but not just according to the specification, required specifications। ये प्लॉट किस चीज का है? सर डिले का है, ग्रुप डिले का प्लॉट है, गुड, शाबाश। So this is group delay plot, or this is indicating that it's because IIR filter tha, and IIR filter are with non-linear phase response and non-linear phase response है, तो इसका मतलब है आपका group delay जो है वो भी constant नहीं है, which is indicated here as well। So we have gone through impulse invariance transformation. We have seen that what is the transformation, and we had done an example with impulse invariance transformation, and that's जो उसके साथ impediments या जो problems थे वो उनको भी हमने देखा। Now let's move to another transformation which is called bilinear transformation. If you we look at the transformation impulse invariance, that was linear transformation. Why it is linear? Because अगर आप इधर आए, this is my linear transformation। कैपिटल ओमेगा और स्मॉल ओमेगा के दरमियान जो रिलेशनशिप है दैट इज लीनियर। नाउ वी आर मूविंग टू बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन और नॉन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। सो समबडी कम्स टू यू एंड सेज दैट दिस इज माय ट्रांसफॉर्मेशन। सो वो कहते हैं जी मैं, अगर आपके पास HFS है तो अगर आप S इज इक्वल टू 2/T 1 माइनस Z इनवर्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस Z इनवर्स, ये अगर ट्रांसफॉर्मेशन आप यूज करें तो यू कैन गेट योर HFZ। ओके, द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट ओके, ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है, जो हमारा कसौटी है हमारे किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन को परखने की, द 3 पॉइंट्स
that the rational transfer function in HFS should be transformed into rational transfer function in HFZ. The causal and stable HFS should be transformed into causal and stable HFZ. And the fourth most important thing is that the G omega axis should be transformed into exponential G omega circle. So we will have to check all these 3 points on this transformation. So let's start doing it. अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है कि रैशनल ट्रांसफर फंक्शन के कॉन्टेक्स्ट में देखें, अगर मेरा HFS जो है वो सम रैशनल ट्रांसफर फंक्शन है और मैं S की जगह पे ये वाली वैल्यू प्लेस करता हूं तो डेफिनेटली this thing is rational, 1 minus Z inverse over 1 plus Z inverse. So as a result of rational transfer function in HFS, I will be definitely transferring into a HFZ which will be rational. Now the second thing is that G omega axis जो है वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है into exponential G omega circle, and for that दोबारा कर देता हूं so that के अच्छा अब देखिए तो मेरे पास ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो क्या है, S is equal to 2 over T 1 minus Z inverse over 1 plus Z inverse. That's the transformation. और मुझे चेक करना है कि G omega axis जो है क्या वो मैप हो रहा है exponential G omega circle पे. I have to check it. And now what's the value of Z? I can replace Z with exponential G omega because Z is equal to R exponential G omega. R is equal to 1 होता है because we are concerned with exponential G omega circle. So Z is equal to exponential G omega अगर मैं करता हूँ तो in fact क्या situation हो जाएगी, S will be equal to 2 over T 1 minus exponential minus J omega divided by 1 plus exponential minus J omega, and that is in fact equal to 2 over T exponential minus J omega by 2 exponential J omega by 2 minus exponential minus J omega by 2. And as a result of all these, this will be cancelled out, and as a result you will be getting S is equal to 2 over T J tangent omega by 2, and we know that S is equal to sigma plus J omega, and that is equal to J 2 over T tangent omega by 2, and as a result of this comparison we end up with omega is equal to 2 by T tangent omega by 2. So now that's the transformation. If you use this transformation, you will be transforming your J omega axis onto exponential J omega circle. शारोज बेटा आवाज आ रही है? यस सर, बिल्कुल क्लियर आ रही है सर. ओके ग्रेट. सो यहां तक पहुंचने में कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन? नो सर. ओके, सो लेट्स ये ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं हो क्या रहा है. सो दैट्स माय J omega axis, and this is my imaginary of Z and that's my real of Z. ये Z plane है, and that's my S plane. अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं. So this is moving from minus infinity to infinity, and that's my exponential J omega circle from 0 to 2 pi, 0 to pi, and then 0 to minus pi या pi से 2 pi, जैसे भी आप उसको देखें. अच्छा, अब suppose करते हैं I am at some point. Suppose that point is
या यूं कर लेते हैं कि हम ओमेगा इज इक्वल टू 0 पे हैं, स्मॉल ओमेगा इज इक्वल टू 0 पे हैं, इसकी मैपिंग हम चेक कर रहे हैं। सो अगर मैं ओमेगा इज इक्वल टू 0 पे हूं, कहाँ होगा ओमेगा इज इक्वल टू 0 जो है ये कहाँ प्लेस होगा इस एक्सिस पे? इफ ओमेगा इज इक्वल टू 0, टेंजेंट 0 इज इक्वल टू जी शारोज, टेंजेंट 0 0 पे ही 0 पे ही। So omega is equal to 0 will be mapped on capital omega is equal to 0 as well. ठीक, चलें सपोज पाई बाय 2 पे पहुंच जाते हैं, यहां पे पहुंच गए, दिस इज पाई बाय 2, कहां पे मैप होगा? This will be omega by 2, so tangent pi by 4, tangent pi by 4 is equal to 1. So जब आप pi by 2 आपका जो होगा वो मैप होगा 2 over t पे, and similarly when you reach pi that would be mapped on, suppose this is my infinity. So 0 से लेके आप चले हैं इस सर्कल पे और पाई तक जब आप पहुंचे हैं तो इनफैक्ट यू आर मूविंग फ्रॉम j omega एक्सिस पे, यू आर मूविंग फ्रॉम 0 टू infinity. So as you are traversing on this exponential j omega circle from 0 to pi, you are in fact moving from 0 to infinity on the j omega axis, and similarly on the other way side, that from you will be moving from 0 to minus pi on this j omega circle, or pi to 2 pi, and you will be moving from 0 to minus infinity on this j omega circle. What is important? That it's a one-to-one mapping. You are, so for every point on exponential j omega circle, there is a one-to-one mapping on this j omega axis. Questions, please. Any question, any confusion? No, sir. sir. Mudassir, any question, beta? So if you take this slice out j omega axis और इसको infinity और minus infinity को आप मिलाने की कोशिश करें तो ultimately क्या situation होगी? The left hand side of this thing will be mapped inside the unit circle. अगर आप इस infinity को उठा के और इस minus infinity के साथ मिला दें तो everything which is present in this left hand side, that would be mapped inside this unit circle. So one-to-one mapping of poles and zeros on the left hand side into the unit circle. So that's a good thing for this transformation. And now let's see that the causal and stable h of s can be transformed into causal and stable h of z. So let's take a point here. Suppose I take a point here and I call this point as minus 2 over 3t. Okay. Just for the simplification, just so that this t should be cancelled out, I'm making this minus 2 over 3t. And now let's see what happens. S कह रहा हूं मैं, S is the point which is minus 2 over 3t. और transformation क्या है S की? That is equal to S is equal to 2 over t. 1 minus z inverse over 1 plus z inverse. And that is now equal to minus 2 over 3t, because I'm already assuming that S is equal to minus 2 over 3t using this equation, this location. So this is my, in fact, it's a real portion, but sigma is equal to minus 2 over 3t, but I'm taking it as S is equal to minus 2 over 3t, any point j omega is equal to 0. And as a result of that, what's happening? Just by cancelling these, so that was the reason I was using this t. So 1 minus z inverse over 1 plus z inverse, that is equal to minus 1 over 3. And as a result of that, I end up with z is equal to 1 over
2. So what is happening? So this point, अगर यहाँ पे मेरा पोल पड़ा हुआ था, तो that pole will be transformed to this location. So a stable and causal, stability and causality in S-plane is the pole should be on the left hand side. So that was on the left hand side, and that is moving at z is equal to 1/2 inside the unit circle, which is indication in the discrete domain that my system is stable and causal. Questions, please. No, sir. Okay. So these are the things which you already know. Bilinear transformation. So that this is the transformation now. Now omega, as we have already find out, that this is my omega. Omega is equal to 2/t tangent omega by 2. That's your transformation. Impulse invariance में आपकी जो transformation थी वो ये थी. Capital omega is equal to omega keeping t is equal to 1. Here again, if you keep t is equal to 1, your transformation is omega is equal to 2 tangent omega by 2. It's a non-linear transformation. So let's see how the things are working. ये मेरी ट्रांसफॉर्मेशन कैपिटल ओमेगा और स्मॉल ओमेगा के दरमियान जो दिस इज माय स्मॉल ओमेगा पाई और माइनस पाई के दरमियान है, और कैपिटल ओमेगा को अगर आप देखें तो दैट इज फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी. यस, दिस इज अप्रोचिंग पाई और माइनस पाई को अप्रोच कर रहा है. सो लेट्स सी हाउ द ट्रांसफॉर्मेशन इज वर्किंग. जिस तरह से हमने उधर किया था, लेट्स डू इट लाइक हियर एज वेल. ये मेरे पास this is my h of j omega, and this is omega, this is small omega, and just one side I will place it, and that's the transformation, and which is approaching to pi. Take another, it should be okay. So that's my transformation. Capital omega is equal to 2/t tangent omega. That's the transformation, and I will be projecting everything on that's my h of exponential j omega, and that's my omega. So suppose that's my filter response in continuous domain. So देखिए अब मैपिंग किस तरह से हो रही है. कोई भी पॉइंट उठाइए, यहाँ पे अगर आप बैठे हुए हैं, it come up over here, and as a result, अरे so and that would be mapped. Similarly, कोई पॉइंट उठाइए, that would be mapped. Now, वहां पे क्या था, क्योंकि 1-to-1 मैपिंग थी, क्योंकि लीनियर मैपिंग थी, तो अगर कोई चीज पाई ओवर टी से ऊपर जा रही थी तो वो
इस लीनियर उसकी वजह से ये बाहर निकल जाती थी, लेकिन यहाँ पे क्योंकि नॉन लीनियरिटी है, एनीथिंग दैट वुड बी मैप्ड एट एनी प्लेस, यहाँ पे अगर कोई मैप हो रहा है तो क्योंकि ये पाई से ऊपर जाने ही नहीं देगा, दिस इज पाई, सो क्या करेगा ये उसको अंदर इधर ही बिठाता जाएगा, इधर बिठाता चला जाएगा। कुछ भी पॉइंट आप उठा लीजिए, कुछ भी पॉइंट आप उठाएंगे वो उसको बिठाता चला जाएगा, इसी के अंदर ही बिठाता चला जाएगा। जस्ट अ मिनट। अस्सलाम वालेकुम, मैं इस वक्त क्लास में हूँ, थोड़ी देर तक बात कर लें। ठीक है बेटा, सो दैट्स माय समथिंग लाइक दैट। सो कुछ भी अगर पाई से ऊपर पड़ा हुआ होगा, दिस इज माय पाई एंड दैट्स माय पाई एज वेल। सो एनीथिंग ग्रेटर देन पाई दैट वुड बी मेड पाई ओवर टी से ऊपर। हम कह रहे थे वहां पे कि अगर कोई चीज पाई ओवर टी से ऊपर है तो that would be aliased in the high frequency component, but here this is not the case. Anything about pi over t, because of this transformation, that would be kept within pi. Questions please. Sharos? Yes sir. Questions? नहीं है सर, समझ आ रही है सर। मेहरताबा, मुदस्सिर, Zain, Zishan? No question, sir. Everything is clear, beta? Yes, sir. Good, very good. चलें, अब एक एग्जाम्पल जो है वो इससे रिलेटेड कर सकते हैं। That's the same thing which we have already seen. अच्छा जी, अब बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन में आपने सिर्फ एक चीज का ख्याल रखना है, that is the frequency pre-warping. That is, you have to ट्रांसफॉर्मेशन जो है आपने उसका ख्याल रखना है, that is 2 over t. This is called frequency pre-warping, omega over 2. So that's frequency pre-warping moving from small omega to capital omega. So perform frequency pre-warp to obtain the corresponding analog filter specs. Pick any t. We are picking t is equal to 1 all the times. Design the analog filter. Use any one of the analog filter prototypes. अगर Butterworth filter है तो you have the prototype, and transform HCFS to HFZ. Okay, exactly same example है। ठीक, सबसे पहला काम क्या है? These are the discrete time filter specs. We know that these are discrete time filter specs because 0 से 0.2 pi तक it is between 1 and 0.89, and from 3.3 pi to pi it is 0.17. Fine. अगला काम क्या करना है? Pre-warping करनी है using the transformation, and transformation is 2 over t tangent omega by 2, and keeping t is equal to 1. So as a result of that, now we are talking about this capital omega. So omega 0 के साथ 0 हो गया, और इधर क्या हो गया? 2 over t tangent 0.2 pi, because ये 0.2 pi आपने उठाया है, tangent 0.2 pi over 2 tangent 0.1 pi हो जाएगा। And similarly जो आपका स्टॉप बैंड की स्पेसिफिकेशन है, that is 2 over t tangent 0.3 pi divided by 2, and omega is greater than 0.3 pi, lesser than infinity. So ये आपके पास infinity तक j omega axis जो है वो मूव कर रहा है। Now again you will be using the same transfer function for Butterworth filter, which is coming from the analog filter design catalogs, and as a result of that, now you have these equations. 1 plus 2 tangent 0.1 pi, that is coming from here. 2 tangent 0.1 pi, because we are assuming that t is equal to 1. So that has been put in this equation. So two equations, two unknown, 0.89 के लिए और 0.178 के लिए. So as a result of that, you have ended up with n is equal to 5.30, but you cannot make n is equal to 5.30 because it should be a whole number. So you keep n is equal to 6. But now there is no restriction. Bilinear transformation में आपके ऊपर कोई restriction नहीं है कि आप किस equation में n की value डालें और आपको मिले, because there is no issue of aliasing in bilinear transformation. So you put this n is equal to 6 in any of the equations and you will be getting your omega c. So as a result of that, you get your omega c as 0.766.
So these are the pole located at 0.766. Again, this is S plane, nothing to do with Z plane. These are S plane poles. H of S square के poles जो हैं ये आपके पास मौजूद हैं. इसके अंदर आपके पास H of S के poles भी हैं और H of minus S के poles भी हैं. Again, क्योंकि n is equal to 6 है, so you are having 12 poles on this circle of radius 0.766. Again, location is same as well. So this is S1 और उसका जो conjugate है वो S2 है. ये आपके पास S3 और S4 है. Conjugate pairs में S5 और S6 हैं. So these are the poles of HFS and these are the poles of HF minus S. For a stable and causal analog filter, all the poles must be on the left hand side of this J omega axis. So that's the situation. From here you can end up with the transfer function. You know the locations. So as a result of that, that is your HC of S and this is your HFZ. So आपके पास ये, so work on this. How these are obtained? Just using the transformation which we have already discussed, and that's your requirement. और अगर आप इसको देखें तो 0.2 pi पे it is 1 and 0.3 pi पे this is 0.3 pi. It's doing good. So it's lesser than 0.17. And that's the situation in log dB plot है और ये आपका linear scale पे plot है. जी जनाब, any questions? No sir. Okay, शहरोज मुदस्सिर बैठे हुए हैं. मैं बताता हूँ सर, एक सेकंड सर. नहीं सर. ओके, मेरे ताबा ये बताइए कि इम्पल्स इनवेरिएंस और इम्पल्स इनवेरिएंस ट्रांसफॉर्मेशन और बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन में कोर डिफरेंस क्या है? सर क्वेश्चन रिपीट कर दें. डिफरेंस क्या है इम्पल्स इनवेरिएंस और बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन में? सर इम्पल्स इनवेरिएंस में हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है और बाई लीनियर में हमारा ओमेगा जो है वो 2/t tan omega/2 आ रहा है. ग्रेट. तो और linear इसका एडवांटेज हमें क्या मिलता है बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन के केस में? सर जब हम लोग h of j omega से h of e raised to power j omega में ट्रांसफॉर्म करते हैं तो वो एलियासिंग नहीं होती, पाई के अंदर ही रहता है. Great. So anything beyond pi over t at j omega axis in bilinear transformation, that would be forced to be within pi limit in exponential j omega circle, and that's the advantage we are getting. But of course it's complex है क्योंकि नॉन लीनियर है, तो नॉन लीनियर की वजह से आपको कैलकुलेशंस जो हैं वो ज्यादा करनी पड़ रही हैं. लीनियर केस में आपको कैलकुलेशंस कम करनी पड़ रही थी, बट ऑफ कोर्स द परफॉर्मेंस वाज jeopardized because of that linearity and aliasing factor. ठीक हो गया जी? Any questions? दोनों ट्रांसफॉर्मेशंस हमने देख ली हैं, इम्पल्स इनवेरिएंस भी, बाइलिनियर भी. कोई अगर क्वेश्चंस हो तो प्लीज आस्क. सर ये ज़रूरी तो नहीं है ना कि 2/t tan omega/2 ही होगा हमारा नॉन लीनियर फंक्शन? कौन सा है? सर हमजा मुबशिर. हमजा मुबशिर जी, आप क्वेश्चन जरा दोबारा दोहराइए. सर क्या हमारा ये ट्रांसफॉर्मेशन का जो नॉन लीनियर फंक्शन हम यूज़ कर रहे हैं 2/t tan omega/2, ये बाइलिनियर के केस में सिर्फ यही फिक्स्ड होगा या कोई और नॉन लीनियर भी हो सकता है? अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर रहे हैं, if you are using this transformation, which is
defined as bilinear transformation in your book, in that case आपकी जो ओमेगा का रिलेशनशिप है वो यही होगा. ठीक है सर. ठीक है ना, क्योंकि वही से फाइंड आउट किया है ना, उसी ट्रांसफॉर्मेशन से हमने फाइंड आउट किया है कि ये प्री-वॉर्पिंग फैक्टर जो आपने फाइंड आउट किया. यस सर. I leave it here because I haven't done the example with the. Inshallah Taala, next time we will be doing our FIR filter design next week, and okay.